अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं कहीं भिजवाने के लिए इफ्तारी तैयार कर रही हूँ, जिसमें है मटन स्टीम इन फॉइल पेपर, रशियन सैलड, चटाई समोसा, चिकन रोल और चिकन समोसा शामिल है। मटन स्टीम के लिए जो मीट सिरके में डिप किया था, इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मटन स्टीम की मैरिनेशन के लिए स्पाइसेस दही में मिक्स करते हैं। मैरिनेट किया हुआ मटन 6 घंटे के लिए रखेंगे। मैरिनेट किया हुआ मीट अब फॉइल पेपर में रैप करते हैं। सारे पैकेट स्टीमर में रख के 1 से 2 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। दूसरी डिश है रशियन सैलड। अब हम चटाई समोसे के लिए फिलिंग तैयार करते हैं।
चिकन रोल के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। चिकन रोल के लिए मिक्सर तैयार है। अब हम समोसे की फिलिंग तैयार करते हैं। समोसे की फिलिंग के लिए भी मिक्सर तैयार है। समोसा रोल फ्राई करके अब पैकिंग करते हैं। इफ्तारी भिजवाने के लिए सामान सारा तैयार है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें।